हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं किब्रिया? Alhamdulillah, very good. So glad to have you. I'm so glad that you were able to take time out for this, and yeah, really looking forward to it. So just a little bit introduction for everyone who has joined. Today we have Usman Fiaz with us. Usman Fiaz is everyone knows him, like whoever is doing business in Islamabad, everyone knows him. He's famous for his creative side. Definitely, he has been a consultant for that we are looking for from Usman, and I hope that this experience is going to be amazing for all of us. Definitely for me, I'll be here, stuck to my screen, listening to what Usman has to say about this. So the idea for this webinar actually is that we want to see how UI UX is going to evolve in the age of AI. So can you guys hear me fine? Usman, am I audible? Yes, yes, it's better now. Okay. So apologies. I think something happened. So the idea for this session is that we'll look into how UI UX is going to evolve in the age of AI and over the years. And there is no one better than Usman to tell us how it's going to happen and how UI UX designers need to future-proof themselves for the current and the emerging market. So that was it. That was just the introduction of the speaker we have today. And AtomCamp definitely is always, making sure that we hold such sessions that you can benefit from. So I would just wrap it up, and I'll give the floor to Usman. It's over to you, and thank you so much for making it happen. थैंक यू सो मच किब्रिया, अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टीम एटम कैंप for finally executing this. We have been planning this for quite a while. Assalamu alaikum everyone. I hope आप सब खैरियत से हैं. To just begin with, I don't like boring stuff. I don't like presentation, teacher, वो class mode वाला. This session will be as good as in engaging and involved you guys are. Otherwise, we can always end it anytime. There is no compulsion of time, and we don't have to do any formality. It's good if we both are learning in this, and हम दोनों का, आपका और मेरा, अगर इसमें टाइम किसी मकसद की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो तभी उसका फायदा है. To begin with, if I can ask, I think we have good 40 plus people. How many of you are designers? Yeah. It will be an interactive session. You guys can keep your chats open. We will keep having the conversation back and forth. Okay, we have four hand. Oh, good. That's good. And in the meantime, as you guys are raising your hands, we're designer. If couple of you or as many of as you would like to, uh, what? And I love doing things like explaining basics first, and instead of just jumping into AI is that is doing design. To begin with the basics, what you guys think of design, and I'm developer, but now I'm passionate to learn UX UI designing with AI. Oh, great. With AI, that's an interesting. How are you approaching this, and what's your roadmap for that? I would love to know, Wasim. And I'm waiting for the responses on what you guys think of the design in one sentence. What's design for you? And if you are asked to define design, how do you define it? Because first we need to understand the basics before we think of the future, or if before we start worrying how future would look alike. We have a Graphical few representation of, hand we have a few hand raised, Usman. We can ask any one of them to just. yeah, sure, if anyone want to talk, and if team atomcam can manage that even better. Yeah, Ifra, why don't you go forward and tell us? जी सर, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई। मेरी आवाज या किब्रिया की आवाज? आपकी आवाज़। मैं पूछ रहा था इफ्रा कि आपके लिए डिजाइन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन डिजाइन?
For me, design, problem solving, user interface, Interesting. responsive Good. design. Thank you. Responsive design. Okay. Okay. Anyone else? We have a couple of comments as well. Design is basically interface of including elements, graphic. Design is used to make anything visually appealing. Design is just the prototype or pictorial view of any app. User-centered interface. Anyone else wants to unmute and tell what design is for you? Can I Okay, so tell? we have, yeah, please. So according to me, that the design is everything which is done in a perfect way. Which is So done it in is in a perfect way, perfect play, way perfect way. What's the perfect way? How do you define that? like उसका interface सही हो अच्छा हो, like usable हो, Hmm. or everything which is usable can be in Okay, the area of design. sounds good. Thank you. An attempt to solve a problem, a different but a good answer, Hasnan. So we have most of the people that I Sir, see one here as, also I'll add yeah. any creativity you can design for your Hmm. ideas is design. Okay, good. The thing that is appealing to the viewer eyes and according to user requirement. Iman, thank you. So why I ask this, and when we talk about the future, I wanted to know हमारा आप लोग डिजाइन या एआई से उतना ही इम्पैक्ट आप पे आएगा जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके रोल को लेके. If you think of it as just as many of you have said, help user to understand what to do or interface or basically elements, graphics, pictorial representation or the graphical representation, which I think I largely disagree to. Design is just not that. और उसका इम्पैक्ट एआई जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि वो इंटेलिजेंस उतना ही प्लेस होगी आर्टिफिशियली जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके रोल को लेके और आप जो समझते हैं आप जो वैल्यू ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उस पर आपका इम्पैक्ट आएगा. देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक अच्छा आप create visual content to communicate messages even better. To me, design is, put it in simple words, how I look at design is an attempt, is a way to plan the future or design or execute the future I believe in. Is a transformation of businesses, is a transformation of an undesirable situation to a desirable situation. स्पेशली हम यूआई यूएक्स की तरफ ज्यादा रहेंगे बट ग्राफिक डिजाइन में भी वो एक मैसेज कम्युनिकेशन की तरफ बात चली जाएगी. मगर जब मैं यूआई यूएक्स को अप्रोच करता हूँ जब मैं प्रोडक्ट डिजाइन को अप्रोच करता हूँ मेरे लिए प्रोडक्ट डिजाइन डिजिटल जो एक्सपीरियंसेस हैं जो डिजिटल प्रॉब्लम्स हैं उनके एक अनडिजायरेबल सिचुएशन से डिजायरेबल सोल्यूशन की सिचुएशन की तरफ जाना. इट्स अ स्ट्रेटजी. इट्स नॉट जस्ट कि वो सामने नजर क्या आ रहा है. It's not, it's, and especially now, it's not just about the interfaces, it's the conversation that you're having with your user. अगर आप सिर्फ interfaces बना रहे हैं then you might be worrying about the AI because it's at the end of the day वो मेरे को पार्टनर है वो कहते हैं at the end of the day it's line between two dots and AI can calculate that and AI can execute that. At the end of the day it's line between two dots. आप उसको जिस तरीके से ड्रॉ कर लें. अगर आपकी अप्रोच और आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिजाइन सिर्फ इस हद तक लिमिटेड है you need to upskill yourself the first and stop worrying much about the AI because AI will replace you if you think in limited capacity. AI will empower you if you think in the larger picture. अगर हम आज डिजाइन करते हैं पहले हम जब एप्स बना रहे होते हैं
हमें आज बहुत हेल्प होती है यूजर रिसर्च में लेके, एज केसेस को लेके कि एक ऐप के डिफरेंट एज केसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि एआई के पास वो सारा डाटा, वो पैटर्न्स में मौजूद है कि आज डिफरेंट जो ऑनलाइन डाटा मौजूद है, जो रिसर्च मौजूद है। In Pakistan, mostly small business are literally running on AI. Sana, can you explain that? I didn't get it. Are literally running on AI. Well, it's good if most business are adopting to AI, but and by the way, it's very open. Any one of you can contribute. You can type here, sir. No need to unmute and talk. You can type here as well. I didn't get exactly what you want to say. But the design, I was reading somewhere, and which I agree to as well, is it's just like strategy as you do different roles हैं उसमें फाइनेंस का जो बंदा है वो भी उस प्लान का हिस्सा है, उस रोड उस पूरे बिगर पिक्चर का हिस्सा है, उसमें जो बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा है वो भी बिगर पिक्चर का हिस्सा है। डिजाइनर्स, हम एज अ डिजाइनर वी नीड टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड जस्ट द इंटरफेसेस, we need to understand and we need to read between the lines, not just the lines. If you're just reading the lines, AI can do that. As a human, हम अब आज बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। I see that as an opportunity for UX designer because now UX is gonna be the differentiator. जब आप सारी चीजें जल्दी जल्दी बना के अपलोड कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू एंड ऑल, सो मेनी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आप बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Is it usable? How good is it usable? Is it accessible? How many of you have read the guidelines or the standard of WCAG, or how many of you know about WCAG? WCAG. I see they rely on ChatGPT mostly. I'm from the content side, so I have seen owner just for content. Yes, Sana, definitely. If you say about content writing, so AI definitely is disrupting that market a lot. फॉर डिजाइनर्स इट्स इम्पावरिंग। पहले जो इमेजेस, पहले जो विजुअल्स आप सिर्फ इमेजिन कर सकते थे, बनाने में मैं हफ्तों लग जाते थे, रेंडर करने में वो उनके क्लिप्स, उनकी स्टैटिक इमेजेस एआई आपको विद इन आवर्स बना देता है। अब जो सोचने और एग्जीक्यूट करने का टाइम है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब आपको वो लंबे लंबे टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि एक इमेज इतने सारे इफेक्ट से डालने हैं, ये रेंडर करना है, रेंडर होने में 4 घंटे लग जाएंगे। वो प्रोसेस कम हो गया है, इस वजह से इट डिमांडिंग, नाउ इट्स इवन मोर डिमांडिंग कि आप अपने स्किल्स जो हैं उन पे मजीद काम करें, और यू आर नॉट जस्ट बिकम अ डिजाइनर बट अ स्ट्रेटेजिस्ट, you become a business person, you understand a business as well, you understand the business models. Yes, it's accessibility standard WCAG. How many of have you as we speak there are a lot of designers right here, how many of you read these in last 2 months? WCAG की वेबसाइट कि आप में से कितने लोगों ने पिछले 2 महीनों में WCAG या फॉर दैट मैटर SDG के एक्सेसिबिलिटी गोल्स, फॉर दैट मैटर किसी कंट्री के कंप्लायंसेस जो हैं एक्सेसिबिलिटी के, वो उसकी वेबसाइट विजिट की है, वो स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं? Great. For UK, great. Saudi jazz. I think 2 or 3 people, if I'm not wrong. Masla, the problem lies here, not with the AI. Problem lies with with our efforts. हम खुद एज अ डिजाइनर जो हैं वो अपने आप पे इतना डेप्थ में, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट डिजाइनर्स इन पाकिस्तान, वो स्किल्स की डेप्थ नहीं है, वो स्किल्स टूल्स की हद तक नहीं है। आपको टूल्स कितना अच्छा, if you think you are a good designer because you can use Figma well, you're replaceable in a week. Give me a person who has good understanding of technology, is sound enough to use computer. I can teach him or her Figma in a week, in 10 days, 12 days. What's the difference between you and that person now? If it's just the tool. अगर बाकी तो आपका
स्थेटिक्स और वो चीजें हैं, दे इवॉल्व ओवर द टाइम। अगर सिर्फ टूल की हद तक अपने आप को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, designer must be worried about being commodity. A lot of designer in Pakistan are just commodity. There's no differentiation. There is no real value that you bring on that. I'm sorry to say that I interview hundreds of designers. I run a design agency. I train designers for good 8, 7, 8 years now. But what the problem is not with the AI first. If we talk about the landscape of Pakistan, problem is with our own. What efforts are we putting in the skills? हम अगर टूल सीख के ये कह रहे हैं कि हम डिजाइनर हैं, फाइन, यू कैन से दैट, बट आपकी किसी बिजनेस को लेके क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू आप इनपुट का, आप सिर्फ स्क्रीन्स बना रहे हैं ना, इंटरफेसेस। बहुत से डिजाइनर जिन्होंने किसी प्रोडक्ट पे काम किया, तो से ये पूछ लें ये प्रोडक्ट करता क्या है, वो कहते हैं पता नहीं, मैंने सिर्फ स्क्रीन्स बनाई हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाउ कैन यू डिजाइन फॉर इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन यूजर रिसर्च? And by user research, I don't mean asking your friends, the actual one. ये एक ही 3, 4, अगेन आप रेशो देख लें हमारे अभी, आई थिंक वी हैव पीपल क्लोज टू 60 और 55, और उस पे जब कोई प्रैक्टिकल एक्शन पे, if I'm talking about, there are barely 5 people on average who are raising hands. The problem is that not the AI. और AI की वजह से फायदा है। अभी मुझे अगर अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कंप्लाइंसेस पे काम करना था, तो आई जस्ट वेंट टू द चैट जीपीटी, मैंने उस पे वो जो सारे डॉक्यूमेंट थे, जो जीआरसी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिए। मैंने कहा इसमें एक्सेसिबिलिटी के कंप्लाइंसेस निकाल के दो। आई वेंट थ्रू देम, और उसकी बेसिस पे मैंने एक रिकमेंडेशन ड्राफ्ट बनाना था पॉलिसी के लिए। So it's that easy. I didn't have to read 80, 85 pages each document and then उससे स्कैन करना, वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करना। चीजें आसान हो गई हैं। आप परेशान हैं, अगर आप परेशान हैं, इसका मतलब आप उनका फायदा नहीं उठा रहे। ये वो सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। We're living in the most advanced, most I would say well-resourced era. Are we taking benefit of that? If we are not, then we are responsible. First we need to question ourselves before we question कि कौन सी चीज आके हमें रिप्लेस हो जाए। Why are you replaceable? That's because आपकी स्किल्स जो हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है। आप वो जो जो एज अ जॉब जहां आप काम कर रहे हैं, वहां आप वैल्यू कम ऐड कर रहे हैं। इवन इफ आई से टू एक्सटेंट आई एग्री के कंटेंट राइटर्स में वो रिप्लेस हो रहा है। देयर आर पीपल हु आर डूइंग ग्रेट इन द कंटेंट राइटिंग फील्ड। दे आर नॉट जस्ट राइटिंग लाइन्स, they are making plans, they're making strategies, they are understanding humans. The difference between AI and a human is AI predicts the patterns, while humans have that transcended knowledge, have that knowledge coming in from the nature, जो आप जो शायद पहले ना हुआ हो, आप वो सोच सकते हैं। AI can predict basis on the pattern it has been fed. बट आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप आउट ऑफ द वे सोच सकते हैं, आप कुछ डिफरेंट आप क्या आप सोच रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर आप नहीं सोच रहे, देन यू विल बी वरीड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Sorry if you guys were expecting something else in this session. It's, as I said again, it's I would be more अच्छा, बेहतर होगा अगर आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें। जैसे आई एम ग्लैड आप काफी कमेंट भी कर रहे हैं। अगर कोई किसी भी पॉइंट पे अनम्यूट होके बोलना चाहता है, मोर देन हैप्पी। आप लोगों के जो सवालात हैं वो पूछना चाहते हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू। कैन वी टॉक मोर अबाउट यूएक्स प्रोसेस, पाइपलाइन, डिलीवरेबल्स? डेफिनेटली वी कैन। प्रोसेसेस, व्हाट यूएक्स इज। हम जंप हमेशा बहुत अक्सर, मैं आपको एक बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ। मुझे बचपन में ना इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत शौक रहा है। छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें खोलना और अंदर देखना क्या है इनमें। एक दफा हमारे घर में ना पेस्टल फैन खराब हुआ।
जो तो मैंने उसकी मोटर खोली, मैंने ये सारा उसका वो चीजें खोली, समझ नहीं, ऑफ कोर्स मुझे कहाँ समझ आने, और उसको सारा वापस से मुश्किल से बंद किया, मैकेनिक की शॉप पे लेके गए। वहां पे उसने पहली चीज पता क्या की, उसने सबसे पहले उसका जो स्विच था वो खोला, उस उधर देखा, उसकी जो तो वायर थी वो स्विच से निकली हुई थी, उसने वो लगाई, वो चल गया। आई वाज लाइक ओके। उस दिन से जो मैंने खुद सीखा वो ये था कि बिफोर यू जंप ऑन द बिगर थिंग्स, स्टार्ट विद द बेसिक्स। मैंने उसे कहा भी कि स्विच इसका ठीक है, अभी कुछ दिन पहले नया लगाया, फिर भी उसने स्विच खोला, स्विच देखा, वो स्विच खराब था, वो ठीक किया, 2 मिनट में वो फिक्स हो गया, वापस उठा। आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एट दैट मोमेंट, बट आई हैड अ लेसन दैट डे। Aisha, you have raised your hand. Do you want to say something? A couple of Aishas, one of them has raised her hand. You can unmute yourself and talk. I think she raised her hand to one of the questions and then that just stayed there. We can continue. Yeah, maybe. Yeah, we can continue. You can unmute at any point, and I don't mind अगर आप interrupt करें, आप में से कोई भी. Yes, Adil, coming to that, answering जब पिछले पूरे 3 सवाल को पूरा करते हुए, आपने प्रोसेसेस, पाइपलाइंस और डिलीवरेबल्स की बात की यूएक्स में, तो मैंने इसलिए कहा कि यूएक्स है क्या। यूएक्स पहले तो प्रॉब्लम को समझना है। हम बहुत जल्दी सॉल्यूशंस पे जंप करने की कोशिश में होते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है कि सॉल्यूशन क्या होगा उसका, हम प्रॉब्लम नहीं समझते, और वी ऑफन फेल इन लव, जो पहला आइडिया आता है वो यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसकी एक और डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप आई रिसेंटली कंडक्टेड, तो उसमें एक बड़ी मजे की एग्जांपल जो मैंने वहां पे भी कोट की थी, आपने यूएक्स की बात की, तो वाशिंगटन में एक टावर है, वाशिंगटन में ही आई थिंक, मैनहट्टन, वहां पे एक टावर है, वहां पे एक मसला दरपेश आया कि वो जो टावर की बिल्डिंग थी वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा था केमिकल यूजेज की वजह से, जो सफाई में इस्तेमाल होता था। So they got worried about it. वो historical monument है कोई कि they were using some chemical in the cleaning process, and it was causing damage to the building infrastructure. So what would have been the first approach? Change the chemical, get the quotations from the different vendors जो सफाई के जो different materials बेचते हैं, उनमें से जब जिसका सबसे ज्यादा सस्टेनेबल क्लीनिंग मटेरियल का आप वो कर लें, कोटेशंस ले लें जो आपको ज्यादा इको फ्रेंडली लगता है, आप दैट्स द फर्स्ट अप्रोच, राइट। मसला उससे आ रहा है, उसी को हल कर लें। व्हाट दे एक्चुअली डिड, दे वेंट अहेड एंड थॉट, हम इतना ज्यादा सफाई कर क्यों रहे हैं, why do we need to clean it that regularly? Okay, the question to that was कि हाँ कबूतर ज्यादा होते हैं तो उनकी वजह से गंदगी होती है, there are a lot of pigeons, उनकी वजह से वो गंदगी बहुत फैलाते हैं, तो हमें सफाई जल्दी। ओके फाइन, अगेन यहाँ पे भी वो रुक सकते हैं कि आप कबूतरों को उड़ा दें, बट कबूतर आते क्यों हैं वहां पे? छोटा सा एक कोई कीड़ा है, आई फॉरगॉट द नेम, वो जो वहां पाया जाता है, जो आई थिंक वो वहां रोशनी पे अक्सर पाया जाता है, कि वो वहां पे होता है जो कीड़ों को बहुत पसंद है। इस सॉरी, स्पाइडर्स वहां बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कबूतरों को बहुत पसंद है, तो इसलिए कबूतर वहां आते हैं। ओके, बट स्पाइडर क्यों है वहां पे? वो कीड़ा जो रोशनी में पाया जाता है, विच स्पाइडर्स लव, वो इस वजह से स्पाइडर वहां पे ज्यादा है। तो वो कीड़ा क्यों है वहां पे? वो इसलिए है कि वो सनसेट से 2 घंटे पहले लाइट्स ऑन कर देते थे, तो क्योंकि पहले से दूर से लाइट नजर आती थी, तो वो इर्द गिर्द के वो कीड़े वहां इकट्ठे हो जाते थे, वहां उसकी वजह से स्पाइडर थे, उनकी वजह से कबूतर थे, और कबूतरों की वजह से गंदगी फैल रही थी, सफाई ज्यादा करनी पड़ रही थी, और वो बिल्डिंग खराब हो रही थी। तो उन्होंने कहा हम 2 घंटे पहले क्यों लाइट ऑन करते हैं, देखो लाइक कोई खास वजह नहीं है, बस ऑन हो रही है तो हो रही है। And they decided, why don't we just turn it off, like why just we don't turn it on like 2 घंटे बाद? Fine, they started doing it. Within 6 weeks
कीड़े कम हो गए, स्पाइडर कम हो गए, कबूतर कम हो गए, और सफाई की जरूरत कम हो गई है। और कितना सस्ता सोल्यूशन है कि अगर आप केमिकल चेंज करें वो सारे प्रोसेसेस में, that you don't must not fall in love with the first idea, first solution, process की जब हम बात करते हैं, go in depth to the problem, first understand the problem. You should know the problem. When I'm working on a product, my goal is to know the product more than the founders. Yes, Nida. Nida has raised hand. जी अस्सलाम वालेकुम। नाम चेंज है यहाँ वो- पर, तो उसमें अच्छा मैंने आपसे क्या कहते हैं कुछ बात करनी थी। जी वो जी ये है कि जो अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन अक्सर हम रूट कॉज देखते हैं, फिर ये चीज़ें भी देखते हैं कि जो पूरा उसका पाथ होता है या कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसका मेरा जो मेरी फील्ड है वो है, बैकग्राउंड मेरा सीएस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, लेकिन जो मेरी करंट फील्ड है कुछ सालों से वो है डिजिटल मार्केटिंग में, मेनली कंटेंट राइटिंग, हम्म कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें, बिजनेस प्लानिंग का भी मुझे एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव राइटिंग इन चीज़ों का। तो अब जब मैं कुछ 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 टाइम पहले मैं रिसर्च कर रहा था इंडस्ट्री 4.0 की, अभी हम नहीं सॉरी 5.0 की, अभी हम 3.0 पे, फिर 4 है, फिर 5 है। तो उसमें मैं देख रहा था कि अनकरीब कुछ सालों में जो ठीक है चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ही रेवोल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगी यूएक्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चाहे जी आपकी वो सेलिंग है, रिसर्च है, चीज़ों का इस्तेमाल है, वो जितना पर्सनलाइज्ड हो ना, जितनी उसकी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो, एक्सपीरियंस हो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें अब मैं देखता हूँ कि ऐसा मैं ही अपनी ट्रांजिशन किस तरीके से मैं वहाँ पर कर सकता हूँ कि मतलब मेरे लिए यूआई यूएक्स क्या चीज़ होगी। क्या वो सिर्फ एक इस हद तक महदूद है कि वो वेबसाइट ऐप का या किसी सैस पर प्रोडक्ट का कोई इंटरफेस है, या लोग की वो, या यूज़र की जर्नी है, या फिर वो पूरा एक यूज़र की इस तरीके से जर्नी होती है, यूज़र की रिसर्च होती है, एक्सपीरियंस होता है। चाहे वो आपका जो पूरे हम फनल्स बना रहे होते हैं कि कस्टमर को हम आएगा कैसे, ठीक है ना, आप किसी भी प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, तो वो उसका उसकी साइकी क्या होगी, किस तरीके से आ रहा हम्म है, अट्रैक्ट क्या होगा उसका, फ्यूचर में हम टारगेटिंग कैसे करेंगे। तो वो यूएक्स को उस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा अपनी ट्रांजिशन की, अगर मैं उस पर करूँ या ना करूँ। एक तो ये चीज़ है कि करता तो कैसे करूँ, उससे पहले एक सवाल है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है क्योंकि मैं समझता हूँ यूआई यूएक्स ऐसा पार्ट है जो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो। जैसे हम कहते हैं ना डिज़ाइन हर जगह, कंटेंट हर जगह, तो यूआई यूएक्स ऐसी फील्ड है जिसको पाकिस्तान में इतना समझा नहीं जाता, हर चीज़ के अंदर है। तो मुझे उसकी वो समझ नहीं आ रही कि ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर है तो कहाँ कहाँ मुमकिन है, या मुझे डिज़ाइनिंग करनी चाहिए प्रॉपर, या फिर एक होता है ना आप खाली अपने कस्टमर को ये समझ लेते हो, उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके जर्नी को, चाहे आपको कॉपी राइटिंग कर रहे हो, पूरा पर्सोना बना रहे हो, तो वहाँ पर। आपका ओरिजिनल नेम क्या है? इज इट अवैस निदा अर्शद। या अवैस अर्शद? ओके। आपने दो डिफरेंट उस पे बात की, एक यूआई की है, एक यूएक्स की है। अगर हम इन अगर हम बड़े स्केल पे बात करें तो दोनों का डिफरेंट अप्रोच है। व्हाट आई थिंक ऑफ यूआई इज यूआई इन द फ्यूचर और इवन व्हाट इज गोइंग टुवर्ड, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स मोर एडॉप्टिव. It's not just displaying things, but predicting things, but in being intuitive enough and being adaptive enough कि आप यूजर्स की नीड्स को लेके एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जनरेट करें. मोर फ्लूइड यूआई देन द स्टैटिक यूआई, which I think a lot of people and the researcher as well as working on is कि आप अब आप ये जितना, क्योंकि अब जब पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है उससे आई थिंक 52 to 55% ज्यादा कन्वर्जन या इससे भी ज्यादा है अगर आप पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं. आप सारे स्पॉटिफाई यूज करते हैं, स्पॉटिफाई में स्पॉटिफाई रैप्ड क्या है, वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है. उसमें डेली प्लेलिस्ट जो आपके लिए ओनली फॉर यू बनती है, या प्लेलिस्ट फॉर उस्मान जो आया होता है, वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है. So UI or even the UX is more toward the personalized, and if you talk about the transition, you can understand better because you know yourself. If you ask me, of course it's possible. I like there's nothing that is impossible, but you know yourself better, and you know कि आप
वो चीज समझ सकते हैं, उस चीज में कितना ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन, मतलब वो इट्स नॉट जस्ट कि आप देयर इज नो प्ले बुक कि आप उसको क्रैम कर लें और उसका टेस्ट होगा। यू हैव टू बी इंट्यूटिव, यू हैव टू बी ऑन द ऑलवेज ऑन द गो, कि आप खुद से चीजें प्रिडिक्ट करें। आप again, as I said, you don't just read the lines, but you read between the lines. And I highly appreciate, इससे पहले एक और सवाल भी था, can you please let us know how AI integrates with UI UX? uh, I'm passionate about learning. There are any tools AI we can use AI in our design? Please articulate pipelines and deliverables. UX के pipelines और deliverable में pipeline start from the problem and then the effect and then its causes. आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इफेक्ट क्या क्रिएट होता है और उसकी वजह से कॉज क्या होती है। तो वह पूरा एक वो ट्री भी बनता है इससे, जो यूजुअली एक्सरसाइजेज में या वो किया जाता है। उसमें यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट कॉज, आप उसके बाद यू डिफाइन कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके इफेक्ट की वजह से रिजल्ट्स क्या जनरेट हो रहे हैं। एंड देन इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस, देयर इज नेवर कि आपने एक दफा रिसर्च की है और वही फाइनल होगी। एवरी मंथ, एवरी वीक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन, you have to be constantly in touch with your users, what they need, how they are evolving, because of abundance of knowledge, abundance of every available resources. World is evolving way faster than uh, as it would have been normally. तो उस वजह से आपको अपना प्रोडक्ट भी उस हिसाब से इवॉल्व करना है, जो यूजर पैटर्न्स हैं, यूजर बिहेवियर्स हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो साइकोलॉजी के लोग हैं वो बेशतर अक्सर कंप्यूटर साइंस उनसे ज्यादा यूएक्स में बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द यूजर पैटर्न, दे अंडरस्टैंड द बिहेवियरल पैटर्न। वो समझना जरूरी है। डिलीवरेबल में इसका स्ट्रेटजी है, रिसर्च है, पर्सोनाज हैं, अफिनिटी मैप्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप जो इसमें डिलीवरेबल्स में कर सकते हैं। बट ज्यादातर लिटरेचर है। अगर टेक्निकल की बात करें, यूजर फ्लोज है, यूजर जर्नी जो आप बनाते हैं, वायर फ्रेम्स हैं, वो सारा बिफोर इट यूआई तो जस्ट अ मेकअप ना, उससे पहले तो सारा यूएक्स का काम है। The people who are raising hand, I'm coming after answering the जो पहले से सवाल हैं। AI integrates with UI. There are tools for AI. We can use AI and develop. There are so many tools, जैसे यूजिबिलिटी टेस्टिंग के काफी सारे टूल्स हैं। आप यूजिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप सर्च करें पब्लिकली मिल जाते हैं। गूगल के काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी के प्लगइन्स हैं। अगेन WCAG के कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज हैं दैट यू कैन यूज एज वेल। और बहुत सारे इस तरह के प्लगइन्स हैं जो आप वायर फ्रेम्स में AI इज हेल्पिंग अलॉट के आप कोई आइडिया आप सोच रहे हैं उसको कहें इसका मुझे स्केच जल्दी से बना दें। ये हाउ गुड ऑफ अ कम्युनिकेटर यू आर, दैट्स समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। अगर हम एज अ डिजाइनर, there's one job that you make something, there's another job that you how you present it, how you communicate it. बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन इस वजह से फ्लॉप होते हैं कि डिजाइनर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या वो बनाए इस तरह से होते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है ना। there's nothing as we know as common sense in the design. It's very subjective. What's common to you may not be common to me. What's common to you may not be common to your users. Make it as clear as possible. अगर आपके यूजर को किसी टास्क पे सोचना पड़ रहा है, there's something missing there. मैं अक्सर अपने टीम में डिजाइनर्स जब कहते हैं ना कि ये अच्छा ये तो इस तरह से है ना, ये ऐसे होगा, उनको कहता हूँ आई कैन नॉट शिप यू विद द प्रोडक्ट कि आप हर यूजर को एक्सप्लेन करें यहाँ पे ये कैसे होगा। मेक इट कि आपके बगैर, आपकी गैर मौजूदगी में एक चल सके। अक्सर जब हम खुद बना रहे होते हैं हम इस 22 में आ जाते हैं कि हाँ ये तो इस तरह से ही होगा ना, ये तो मतलब ये तो पता है, इस तरह से नहीं पता। पुट इट इन द डिजाइन, मेक इट क्लियर इनफ, मेक इट इंट्यूटिव इनफ, मेक इट इजी इनफ। अगर सोचना पड़ रहा है यूजर को तो फिर कहीं ना कहीं मसला है, क्योंकि वो जब कुछ सोचता नहीं है, विद इन 80% ऑफ द एप्स जो हैं वो इंस्टॉल करने के 3 दिन बाद डिलीट कर दी जाती हैं। एंड प्रॉब्लम इज मोस्टली प्राइमरली नॉट विद द टेक बट विद द डिजाइन। आपका चर्न रेट सबसे ज्यादा डिजाइन की वजह से हाई होता है। ऑनबोर्डिंग आपने कैसे की है, आपका होम स्क्रीन क्या है, आपकी लैंडिंग क्या है, वो गाइड कर रहे हैं नहीं कर, इफ इट्स, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। We can say it seems like make research finding problem in depth lead to UI. Are there a plugin that can UX 2x faster work? There are definitely. To begin with ChatGPT, simply आप ChatGPT के साथ वो रिसर्च बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आप कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं,
उसके एज केसेस पे जो है कि वो बहुत ज्यादा आपको चैट जीपीटी से मिल सकते हैं, पर्सोनाज में बहुत हेल्प हो सकती है। चैट जीपीटी को भी आप क्या प्रॉम्प्ट देते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट कराते बेटर रहता है। आप सेम चीज पे चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करें, कोई और बंदा सेम पे कन्वर्सेशन करे, दोनों में डिफरेंस रिजल्ट आएंगे। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ गुड ऑफ ए कम्युनिकेटर यू आर, दैट मैटर्स। दिस मेक्स डिजाइन मोर वैल्यूएबल देन कोड। इसीलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, ये जानने में कि आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी जो सोच है उस किसी भी चीज का रिजल्ट उसी के मुताबिक होगा, इम्पैक्ट उसी के मुताबिक होगा। हाउ इम्पोर्टेंट डेटा एनालिसिस इज फॉर ऑल these steps and strategies. Atom camp plugging that they teach data camps, sorry, data analysis. By the way, they are good in that. अगर आप में से किसी ने डाटा एनालिसिस या एआई में कुछ सीखना है तो इनके कोर्सेज जरूर चेक कीजिएगा। इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस देन जस्ट द assumptions. assumptions में अक्सर आप मारे जाते हैं। बेहतर है कि आप डाटा ड्रिवन डिसीजंस करें। आप वो सारी डाटा चार्ट्स और वो सारे हीट मैप्स डिप्लॉय करें, उनकी बेसिस पे जो स्टैट्स आ रहे हैं अगर आप उन पे रिलाई कर रहे हैं तो एरर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो सकते हैं। सो वंस अगेन डू ज्वाइन एटम कैम्प के डाटा एनालिसिस बूट कैंप्स। आई होप दैट्स इनफ। Is it necessary to do wireframing before designing? In some cases, yes. अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लैरिफाइड नहीं है तो यस, बट अगर आपको लगता है कि, और जरूरी नहीं कि पूरे प्रोडक्ट की वायर फ्रेम्स आप बनाए एट वन प्लेस, वो जरूरी नहीं, सिर्फ उन मेन की फीचर्स की प्रोसेसेस की वायर फ्रेम्स कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए डिजाइन में होगा क्या। क्योंकि अक्सर होता ही है जब आप यूआई में विच इज कलर्स, फोन्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये लग कैसा रहा है, उस वजह से आप फीचर्स पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, यूएक्स कंप्रोमाइज हो रहा होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऐड हो गई हैं। अगर आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे पहले ये कहेगा यार ये थोड़ा फीका लग रहा है, यार ये चीज इस तरह से कर दो, फर्स्ट फोकस ऑन द यूजेबिलिटी। तो इस वजह से वो जरूरी कुछ केसेस में है बट नॉट इन एवरी केस। और जरूरी नहीं कि आप बैठ के पहले साइन इफ साइन अप इज ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, you guys can check our data analytics, there you go. इज इट सो इट डिपेंड्स कि आप क्या फीचर पे काम कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, बट गुड एंड इट्स जरूर आपको प्रॉब्लम क्लियरली एक्सप्लेन करने में, खुद समझने में हेल्प होगी, और आपके माइंड में जो सोल्यूशन है वो आपके क्लाइंट को समझाने में भी। जी आदिल, यू हैव अ क्वेश्चन। Sir, I just want to know your point of view about user journey map. What I have learned is that we need to design, we need to know what is the user feeling about any of the page, either it is website or like mobile app. So I just want to know like how we can identify like what's the user feeling, because we have not even launched the product, and like even it is not deployed for the development. So how we can identify what is the user feeling on a specific page? Could you please elaborate that? Thank आपने कभी एफिनिटी मैप्स पे काम किए? you. No. अच्छा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप वो मैप कर सकते हैं कि एक स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यूजर की फीलिंग्स क्या हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या हैं। हाउ डू यू नो, वो आप तभी जान पाएंगे अगर आप यूजर को इस्तेमाल करते हुए देखें। मेरे टेस्टिंग पे थोड़ा सा अक्सर इख्तलाफ रहता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए एक यूजर को एक प्रोटोकॉल वाले एनवायरनमेंट में ला के बिठा देते हैं और उसको कहते हैं ये प्रोडक्ट यूज करें, तब वो कॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स जब यूज होते हैं, आप भी जब कोई ऐप यूज करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस यूज हो रहे होते हैं, आप सबकॉन्शियसली उसको यूज कर रहे होते हैं। इट्स नॉट, तो सॉरी, हाउ डू आई डू दिस अगेन। हाँ, सो आप जब भी किसी, खुद भी किसी, आपको पता है कि अच्छा इसका फलां बटन कहाँ पे है, मेन्यू लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होगा, हेल्प पे जाना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे होगा, आपको पता है। वो जब आप, मगर आप कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को कहना रुक के ये यूज करके बता ये यहाँ से यहाँ साइन अप कैसे हो सकता है, तब वो दिमाग लगा रहा है उस चीज को समझने में, जो नॉर्मली यूजर नहीं करता। ऐप की वजह से आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिस आउट कर जाते हैं। तो वो जो So फीलिंग्स हैं sir, वो आपको my यूजर ही question is बता like, सकता है कि
या दैट्स माय क्वेश्चन कि यूजर की हमें फीलिंग्स का आइडिया ही नहीं है, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई यूजर की क्या फीलिंग्स हैं बिफोर प्रोडक्ट उसमें लॉन्चिंग। अभी हम यूजर जर्नी में, जी जी ओवर। उसमें यूजर जर्नी में तो आप टेस्टिंग से ही कर सकते हैं ना। अगर आप बिफोर लॉन्च की बात कर रहे हैं, लॉन्च के बाद तो आपको बस स्टैट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट मैप्स से या डिफरेंट यूजेबिलिटी टूल्स के थ्रू के चर्न रेट कहाँ पे आ रहा है, वो ऑनबोर्डिंग पे लूज कर रहे हैं आप। वो अगर आप इवेंट ट्रैकिंग कर लें उसमें किसी भी ऐप में, तो वो तो आप ट्रैक कर सकते हैं। उससे पहले आपको यूजर्स के साथ टेस्ट करके वो नॉर्मल, और ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट बना के टेस्ट करें। वो इट कुड बी एज सिंपल एज आस्किंग देम टू कि आप अगर ये परफॉर्म करना हो, आपको ये स्टेप इन दीज, यूजली रूल ऑफ थंब है कि कोई भी एक्शन, कोई भी टास्क कंप्लीट करने में 3 स्टेप से ज्यादा का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और बाकी जो आपकी बात है वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग, आप यूजर को यूज कराने के बाद डिफरेंट हीट मैप आप इंस्टॉल कर लें, तो उसकी वजह भी आपको काफी डाटा मिल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेट कहाँ पे हो रहा है, वो फीचर वो ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा, वो कहाँ पे दरमियान में छोड़ के जा रहा है, या वो अगर हम इन डेप्थ बात करें तो बहुत से यूजेबिलिटी के हार्डवेयर टूल्स भी आते हैं जो आपके आई ट्रैकिंग मूव नोटिस कर रहे होते हैं, और वो ये बताते हैं कि आपका यूजर देख कहाँ पे रहा था। Empathizing with the user, and is that a question or you're answering to something? Empathizing with the user, it's important. One should empathize. Okay, empathizing आल्सो with the सर, user, but how do you do that? Yeah, Adil. आई हैव अनदर, आई हैव अनदर क्वेश्चन। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और वो जी। प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट है, आपने हम्म। अपनी लाइफ में कभी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट फेस ही नहीं किया, या मतलब वो इतना क्लाइंट का यूनिक आइडिया है, तो आप उसका मतलब आपके पास कोई कंपेटिटर भी आपकी नहीं है, आवाज तो आपकी हाउ यू आवाज मेक, सॉरी, लेट मी रिपीट सर, कैन यू हियर मी नाउ? मैं आपको कैन यू रिपीट? या मैं ये बोल रहा था कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट में सरवाइव नहीं करता, और वो क्लाइंट का एक आपकी यूनिक आवाज आइडिया बार है, बार तो कट रही हम, है आदिल। लेट मी चेंज माय लोकेशन सर जस्ट। आप, अगर मैं समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता और उसके बारे में डाटा नहीं जी अवेलेबल, एग्जैक्टली, और वो क्लाइंट का ना यूनिक तो आइडिया है। उसका टेस्टिंग की आप नहीं, बात कर रहे हम हैं? उसके बारे में, उसका कोई कंपेटिटर भी नहीं है। क्लाइंट का यूनिक आइडिया जी, है। हम उसके बारे में रिसर्च कैसे करेंगे? जी। तो मतलब जितनी ज्यादा हम क्लाइंट के साथ उसके इंटरव्यूज यूजर्स कर तो एग्जिस्ट करते हैं ना, किसी के लिए तो बना रहे हैं आप। जी नहीं, एग्जैक्टली, क्लाइंट के साथ इंटरव्यू नहीं करने हैं आपने। आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, यूजर्स के लिए बना रहे हैं? क्लाइंट की प्रोडक्ट है ना, उसने अपनी मतलब लॉन्च करनी है। हाँ, नहीं, यूज कौन करेगा, यूज कौन करेगा? आपका द क्लाइंट या उसके एंड यूजर यूजर? भी, नहीं, नो नो नो, द एंड यूजर विल बी लाइक, एंड यूजर एग्जिस्ट करते मैंने, होंगे ना, जी एग्जैक्टली। तो उनसे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। अभी बल्कि कपल ऑफ टाइम्स, हाँ, ये दिस इज, हमें एज अ डिजाइनर अक्सर मसला आता है, क्लाइंट को ये लगता है कि या वो ये चाहता है जो उसके माइंड में वही बनाए। तो कपल ऑफ टाइम वी गिव दिस डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स कि आई एम अफ्रेड वी विल एंड अप विनिंग योर यस एट कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर कस्टमर, डू यू वांट अस टू डू दैट? इफ यू से यस वी विल विन योर यस, वी गारंटी यू कि हमको वो बनाएंगे जो आप वाओ, आपके जिस पे कमेंट आएगा, बट वी डोंट गारंटी द रिजल्ट्स। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट इफ यू लीव इट टू आवर हैंड, वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये फंक्शनल होगा। सर वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान में कुछ इस तरह से भी होता है कि आपके पास ना बाउंड्रीज होती हैं, लाइक टाइम लिमिट होती है, और आपको विद इन डेडलाइन आपको पूरा करना होता है प्रोजेक्ट, एंड यू डोंट हैव एनफ टाइम टू मेक रिसर्च ऑन अ यूजर, लाइक यू नीड टू मूव डायरेक्टली ऑन द तो यूजर आप इंटरफेस डिजाइन। एक्सपेक्टेशन मैनेज करें ना, देन यू डू द एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कि आप क्लाइंट को कोई एक्स्ट्रा चीज ना बोले, उसको क्लियर करें कि हमारे पास इतना टाइम है, इस टाइम में ये चीजें हो सकती हैं। आई एम श्योर आपको और डिजाइनर बारह होता है, हम के खुद कह चुके हैं, हम के और डिजाइनर आपको कहेंगे सब हो जाता है, वो कर भी देंगे। मगर हमारे प्रोसेसेस में, और हमें ये है कि इसको इतने टाइम में होना चाहिए, अगर आप सारी चीजें ये कराना चाहते हैं, और उससे पहले अगर कराते हैं, तो वी आर अफ्रेड वी वोंट टेक गारंटी ऑफ, इवन दो हम अपना एफर्ट, बहुत बेस्ट एफर्ट पुट करेंगे, मगर इट्स अ रिस्क दैट यू टेक फॉर योर क्राफ्ट।
हो सकता है वो क्लाइंट को आपको मना कर दे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने जितनी दफा भी क्लाइंट को ये कहा है, एक दो वो शुरू में चले जाते हैं, मगर कुछ टाइम बाद जब दूसरों से काम करा के टाइम जाया, पैसे जाया कराने के बाद वापस आए हमेशा। If someone in my team is there, they can tell that they know that Sir, this has I think happened multiple आपके times. केस में maybe you have to communicate with your client, but in our case, like there is a communication gap between the end user, like the client, and me. Communicate to your manager. Communicate to your manager. Okay, I got it. Thank you, sir. देखें, आपको जो चीज, इट्स जस्ट लाइक आप उसको, सिंपल है ना कि आपको जो इनपुट है आप उसी का आउटपुट क्रिएट करोगे ना, उसको क्लियर कर देंगे। मुझे इनपुट अगर आप इतनी दे रहे हैं तो मैं आउटपुट भी उसी हिसाब से, आप मुझे एक्सपेक्ट करें कि मैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालूं और पूरी डिश बना दूं, वो तो नहीं पॉसिबल। Like I'm not a magician. At the end of the day, I'm a technical person who have to drive result out of what I have. Yeah, I got तो your point, sir. Thank you so much. पूरी, जी निदा, अच्छा मेरे सॉरी, कोई बात नहीं, ये होता है अगर किसी अगर मोबाइल जी यूज जी करे। अवैस। अच्छा दो तीन क्वेश्चन है आपके। एक तो ये कि मैं कुछ टाइम पहले एक ऐप पे मेरी रिसर्च चल रही थी, क्योंकि हमने एक ऐप लॉन्च करनी थी, वो एक तरह से सैस प्रोडक्ट ही आपके वाले। तो उसमें ये था कि जो मैंने उसको देखा ना कि किन किन क्या क्या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की वायलेशन है, ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मैंने उनको आपकी देखे थे। आवाज तो कट हो उसमें रही है अवैस, आपकी आवाज कट हो रही है। अब आ रही है आपको मेरी, अब आवाज आ रही? जी इट्स बेटर। अच्छा, तो मैंने एक ऐप डेवलप करने के लिए, मतलब हमारी टीम ने, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ रिसर्च की थी प्ले स्टोर की और ऐप स्टोर की। उसमें ये दिखा रहे थे कि सुपर यूएक्स होना चाहिए। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुपर यूएक्स क्या है। मैंने इसको काफ़ी सर्च सुपर किया लेकिन मुझे यूएक्स, मिला नहीं कि उन्होंने इसको क्या डिफाइन। जी सुपर यूएक्स, इनकी पॉइंट नहीं, ये वरना आप उनसे इसका देखें पूछे ना, ना वो क्या होता है। वो उन्होंने बताया नहीं, ये गूगल देखें, वालों की है। आप बहुत सी दफा ना ये अक्सर औकात हम भी चीजें जब एज्यूम करते हैं ना एज अ डिजाइनर, बाद में हमें उसी के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। अभी जैसे शुरू में किसी ने सवाल पूछा था कि परफेक्ट रिसर्च क्या होती है, तो मेरा उनसे पहला सवाल ये, परफेक्ट क्या होता है? क्योंकि ये सारे चीजें सब्जेक्टिव हैं, सारे एडजेक्टिव्स जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं, कि हाउ यू परसीव देम, जरूरी नहीं मैं भी उनसे यही मतलब समझता हूँ। और आजकल तो विद द जनरेशनल गैप्स, जो आप किसी को कहें सिख, वो जेंजी उसका कुछ और समझेगी, बूमर उसका कुछ और समझेगा। बूमर इयादत के लिए आ जाएगा, जेंजी पार्टी के लिए आ जाएगी। you if you say that it's very sick, so clear that gap, break कहीं, तो आप अपने सवाल करेंगे और लीडिंग क्वेश्चंस कम करें, ओपन एंडेड सवाल होंगे तो उनका, आपका गोल उनका माइंड अब्जॉर्ब करना है, उनके मुंह में जवाब नहीं देना। किताबें पढ़ें सही। बहुत ज्यादा, उससे आपको बहुत हेल्प होती है कि आपको सवाल कैसे करने चाहिए। अल्फाज बहुत मायने रखते हैं, आप एक अल्फाज को किस तरह से शेप करते हैं, इट कैन चेंज एवरीथिंग। अच्छा, ये अल्फाज रिलेटेड आपसे मैं पूछ रहा था कि यूएक्स कॉपी राइटिंग, मैंने इसका देखा जी, था, लेकिन ये कहता था कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है यूएक्स कॉपी राइटिंग का? दोनों जगहों पे डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कौन है। पाकिस्तान में भी अच्छे क्लाइंट है, मे बी रेशो कम हो क्योंकि पाकिस्तान में सर्विसेज का काम ज्यादा होता है और लो टिकट सर्विस का काम ज्यादा होता है, तो उसमें क्वांटिटी पे फोकस की जाती है क्वालिटी से ज्यादा। बाहर पे भी यहाँ थोड़ा डिपेंड करता है कि आपकी, यूएक्स कॉपी राइटिंग क्या है, बाकी को भी तरह हाँ, आइडिया हो तो जाए। यूएक्स कॉपी राइटिंग वो बहुत आपको हेल्प हो सकती है एआई से। अच्छा, और हार्डवेयर में जी, हम यूएक्स कैसे क्या कहते हैं इसका हम करते हैं? यूएक्स कॉपी राइटिंग का सिंपल अगर मैं कहूँ, उसका गोल ये है कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। उसमें फैंसी लफ्ज नहीं है इस्तेमाल करने, उसमें आपने ये नहीं, आपका गोल ये नहीं है कि आप ये शो करें आपको अंग्रेजी आती है, आपका गोल ये है कि यूजर को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही। तो इसके अलावा जो आप कह रहे हैं यूज़र को हमारी बात समझ लगे, इसमें हम अपने यूज़र को जो रिसर्च करते हैं, जो टारगेट करते हैं, अब एक यूज़र को हम
कर नहीं सकते, तो पूरा वो एक ग्रुप होता है। जैसे मैं कहता हूँ एक जी स्पेसिफिक एज के, फोकस ग्रुप होता जेंडर है। के, उनके उनके ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, तो हार्डवेयर में हमारा यूएक्स क्या होता है? वहाँ तो आई थिंक यूआई एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तब तक आपका प्रोडक्ट हाइब्रिड नहीं। अगर आपका एक हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट है प्रोडक्ट तो वहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कितना आसान है और जो उसका पर्पस है वो पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो मतलब इफ Sir, Avas bhai, I can give you इट्स an जस्ट example of फैंसी प्रोडक्ट। hardware. Like आप कीबोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, like if you want to type and like ASDF आप रखते हैं हाथ उस पर, you can type like frequently. तो ये यूएस की बेस्ट एग्जांपल। दैट्स अ गुड वन। राफी, आप यू वांट टू आस्क समथिंग? Yeah, hi, Assalamualaikum. I'm a वालेकुम UX सलाम। designer for like a couple of years, and like I've worked in US-based company. It was a design agency, and after that, I switched to a Dubai-based company, which is I'm working as a freelance contractor. But the problem is हम्म। mostly they assign work on task based. So you have to do like chunk of uh, a certain project. ठीक, आपकी आवाज बीच में So कट बहुत हो रही uh, sorry, अब ठीक है? अब ठीक आ रही है है। जी, आपको मेरी आवाज? आप ओके। टास्क बेस्ड तो आपको असाइन किया जाता है। दैट्स व्हाट आई हर्ड लास्ट। या तो उसमें ना आपको बहुत थोड़ा सा चंक करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट का, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एक तो। दूसरा ये है कि जो मेरा पूरा प्रोफेशनल कर्व आ रहा है उसमें मैंने मोस्टली काम किया है यूजर इंटरफेसेस पे, और हार्डली मैं काम कर सका हूँ यूजर एक्सपीरियंसेस पे, रिसर्च वर्क पे। सो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? और क्योंकि मुझे ना बहुत कम आइडिया है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसे वर्क करता है, और मेरा उस पर काम भी बहुत कम हुआ है। तो मैं इसको अपनी फील्ड में कैसे मजीद इस पे वर्क कर सकता हूँ, और कैसे कॉप अप कर सकता हूँ इसके साथ? आप एज अ यूआई डिजाइनर यूएक्स अपना बेहतर कैसे कर सकते हैं? Is that- जी जी। बहुत क्योंकि ज्यादा पढ़ हमारे के, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके, हाँ, बहुत ज्यादा लेकिन पढ़ने से, बहुत ज्यादा मोस्टली जिन ऑब्जर्व। कंपनीज में मैंने काम काम किया वो ये चीजें ऑफर ही नहीं करती। वो मोस्टली आपको असाइन कर देते हैं कि आपने ये का टास्क करना, और ये नहीं, इसमें एक वो सर्टेन चीजें हैं। हाँ, एक वो चीज है जो आपसे कराई जाती है, एंड देन हाउ मच यू आर विलिंग टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपनी स्किल्स को अपस्किल करने में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए कितना सिंसियर हैं। मतलब आप सिर्फ ये अगर कह रहे हैं मेरी कंपनी ने मेरे से नहीं कराया था, तो फाइन, आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते। मतलब अ, उन्होंने वही अ, कराना है जो उनको चाहिए। उन्होंने तो आपसे वही चीज करानी है ना। नॉट एवरी वन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लर्निंग एंड ग्रोथ। इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स फाइन। बट ऑन द अदर एंड वो मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में काउंट उस तरह से नहीं होगी। देखें, आप पहले ऑफ कोर्स आप पहले सीखते हैं, उसके बाद आप उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, आप जब कहीं पे वो वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है, वो आपका जब आप यूएक्स सीखने के बाद यूआई करेंगे वो डिफरेंट होगा। जब आप कहीं प्रेजेंट करेंगे वो आप स्टैंड आउट होंगे। सो इट्स द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आप कहें आज मैंने जो आर्टिकल पढ़ा हूँ शाम को बैठ के 1 घंटा जो मैंने लगाया है उसकी वजह से कल मेरी सैलरी रेज हो जाए, वो तो नहीं होगा। पहले आपको अपने आप पे इन्वेस्ट, No, it's not like I अपने लिए don't भी like तो। do researches and do I study हम्म most of the case. I do spend on studying most of the user हम्म researches, case आई studies एम and all. श्योर। Yeah, but मैं उसको प्रोजेक्ट में यूटिलाइज उस तरह से नहीं कर पा रहा, because there's a नहीं, आई एम limitation श्योर of आप time. आपको शायद आप नोटिस ना देखें, आप शायद नोटिस ना कर रहे हूँ, आप जरूर जो भी चीज बना रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वो जरूर है। मगर as a designer, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
जी मेरा ख्याल है there is some issue on Usman's end. Usman, can you hear us? It's a progressive investment that you are doing on yourself. आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी काफी लॉन्ग टाइम लाइक उस्मान जो आपने Was पिछले it शायद 1 मिनट में बोला है like we were this stuck, so for everyone? there was some connectivity issue. But yeah, I think we got, yeah, yeah, it's still there. But I think we got Rafe's question. Thank you. And Oh, is it fine? yeah, it's better now. Abu Huraira, are we done with the time or can we No, no. answer this If you question want that to we if have you in the want chat? to answer the questions, you can definitely take your time. What time is it? What if in a project we can't, what if in a project we can't and don't know about the users? Like in the small projects, we only have to have end-to-end connections with client only. Then how we can initialize the user research? Are you responsible for the user research for that project? If client say yes, then ask him to expose you to the users. अदरवाइज उस आप जब किसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको रिपीट करके क्लाइंट से क्लियर कर लें कि मुझे ये आपने बताया है कि एक प्रोडक्ट इसमें ये होगा फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द ब्रीफ एंड डॉक्यूमेंट इट ताकि बाद में अगर आपको कहीं पे अकाउंटेबल किया जाता है यू कैन रेफर टू इट कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड एंड दिस इज व्हाट आई वैलिडेटेड एज वेल. And if you're not exposed to the user, then are you responsible for the user research? If you are, ask the client. मतलब आप मुझे कह रहे हैं यूजर रिसर्च करो मुझे यूजर ही नहीं आप मिलने दे रहे तो मैं कैसे करूँगा. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है नॉट जस्ट इन डिज़ाइन जिंदगी के किसी भी मरहले में आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना ज़रूरी है. अजम्पशंस में जितना चलेंगे नुकसान होगा. व्हाट इफ क्लाइंट आस्क देन आस्क हिम कि भाई यूजर कैसे करना है. अगर आपको इंटरव्यूज करने अगर वो यूजर तक नहीं कनेक्ट करा तो उसे कि मैं खुद रीच आउट करूंगा देन आई पे मी फॉर दैट. देयर आर ऑनलाइन टूल्स जो आप अगर डाटा सेट दें तो उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं आपको वो यूजर टारगेटेड यूजर के साथ आपके इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं उसको प्राइसिंग बता दें वो टूल्स की कि ये इतने इसके लिए मिनिमम हमें डाटा सेट 40 का चाहिए और 40 की प्राइसिंग ये है इसके ऊपर मैं अपना सर्विस चार्जेस इतने लूंगा. You are gonna pay for that. If you agree, let's do it. If you don't, वरना सेकेंडरी रिसर्च कर दें. अगर यूजर रिसर्च प्राइमरी नहीं कर रहे तो उसे मैं सेकेंडरी रिसर्च करूंगा उसके चार्जेस इतने होंगे. सेकेंडरी में लेट्स से आप एक ऐप बना रहे हैं आप अपने कंपटीटर्स के जाके गूगल ऐप स्टोर पे कमेंट्स पढ़े उसको ऐड दो स्क्रीनशॉट्स यूजर की ये फ्रस्ट्रेशन है वो क्लियर अगेन उसको ये क्लियर कर दें कि मैं सेकेंडरी रिसर्च कर रहा हूँ किसी से डायरेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट बात करता हूँ उसके ये चार्जेस हैं उसके ये प्रोसेस है. डू यू एग्री? इफ यू डोंट दिस इज द वर्क अराउंड. इफ यू डोंट इसकी बड़ी I अक्सर think we can प्राइसिंग wrap में up. बड़ी एग्जांपल को की जाती है अक्सर. जी अनुषा. Yeah. I think we have come to the end of the session now. A little about me. I'm Anusha Qureshi. ओके I'm the person in the content and the creatives that you see on atomcamp. So thank you so much, Usman, for this awesome webinar on ग्रेट. future-proofing UX design in the world of AI. Honestly, I loved how you focus on identifying the problem and designing with the end user in mind. And I feel the real life examples were super helpful. And even with over 50 plus people, you managed to keep this interactive and engaging, which is fantastic. I'm sure as much as I learned from this थैंक webinar, यू. everyone else have learned as well. So thank you so much for your time and keeping everyone engaged. That was amazing. And with that note, I think we can end the session. If you still want to continue and answer, it's totally up to you. And if anyone wants to stay, they can. But yeah.
No, I think thank you so much. We can keep converse. मेरी तो रोजी रोटी है, मैं दिन रात इसी पे बात करता हूँ. But time is short. If anyone wants to have further conversation, more than happy. You guys can like drop a message. My Insta handle is usmanfiaz06. Fiaz as Fiaz, and LinkedIn is Usman Fiaz. You guys can reach out there or email or whatever is the convenient way. या जो एटम कैंप पे इस वेबिनार का पोस्टर है वहां मुझे मेंशन करके क्वेश्चन ड्रॉप कर दें. आई विल ट्राई टू आंसर देयर एज वेल फॉर टिल टुमारो. तो मैं उसको चेक कर लूंगा कल शाम तक. एंड देन मे बी वी कैन हैव अ फॉलो अप वेबिनार इन द फ्यूचर सम टाइम. Thank you so much, team Atom Camp, Yeah. Anusha, Kibriya. Do Thank sign up for the boot camps for the Atom Camp. These guys are doing great job. So yeah, so guys, we have a couple of open boot camps at the moment. The one that Usman stressed the most was the data analytics one, and that's something that everybody can join without any background in data analytics or data science. It starts on 8th November. It's completely online for 2 months. So, and we're taking registrations right now. We have limited spots, so you can guys can register. I've also shared the link on the chat, so you can find it there. Otherwise, we are pretty active on our socials. We have other boot camps too. We have the AI boot camp with NAS, then we have the low code one as well. So do check it out. All of these boot camps are open for registrations, and we are at the moment taking in people. So thank you, Usman. And as you said, there are more questions that people have. You guys can put it on our LinkedIn post, and then Usman can get back to you. Our LinkedIn post, we had uploaded one yesterday, and then we will also be putting up the webinar highlights most likely tomorrow. So you can put it up there as well. So that'll be great. Thank you so much, guys. This was great. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. The